Dear comrades, first of all, a big salute to all of you. You have been not sitting just here on dharna, but you are on the streets, braving the lathis, braving the attack of the police, and you are the first to come on the streets in such a big way. So I would like to salute. We are people who have come through this process, which we have learned from SFI. Now we are linked with the किसान मूवमेंट. आप सभी जानते हैं कि 2020 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी नीतियां 3 काले कानून लागू किए थे, उसके खिलाफ 380 दिन का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ. 736 हमारे किसान साथी उसमें शहीद हुए. उसके बावजूद हम कहें कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे. 3 काले कानून वापस होगा तब हम घर वापस जाएंगे. और उस आंदोलन में आप सभी साथ खड़े थे. छात्र आंदोलन, खास करके एसएफआई और जेएनयू जैसे और डीयू जैसे जामिया और अन्य जो विश्वविद्यालय के लोग उस आंदोलन में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ थे. वो जीत सिर्फ किसानों का जीत नहीं था, वो आप सभी का जीत था. आज जब आप यहां बैठे हैं, ये जो 22 लाख बच्चे जो ये परीक्षा दिए, जो आज संकट में है, वो 22 लाख बच्चे जो हैं वो किसान परिवार, मेहनतकश के परिवार, आम जनता, गरीब के परिवार से आने वाले हैं. और उनके जो परिवारजन जो खर्च किया, ये सबको खत्म करते हुए उनका जो आशा था, द होप दैट द फैमिलीज हैड, that was destroyed by Narendra Modi's government. And this is the most insensitive government that we have seen. But the message of the United Kisan Movement is that if we are united, if the people are united, not Modi, any even much more worse government, much more tyrannical governments will have to bow down before us. Victory will be ours. The people united will always be victorious. That is what the history has taught us. I, on behalf of All India Kisan Sabha, also extend our greetings to all of you who are sitting on hunger strike today, and to Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk, an educationist who has come all the way from Ladakh here, who has dared to take on this government and in support of the student community here. So I think that is a great gesture on his part. It is on the 19th day of the hunger strike. We have all in our student movement have experiences of long hunger strikes. It is not at all an easy job. It has a long-term effect also. But it is the selfless manner in which that he has come here in solidarity with you. I think that is a great act. Dear comrades, we during the Kisan movement said that struggle was such that it sowed fear in the minds of our enemies and hope in the minds of our friends. वो जो आंदोलन हमारे दुश्मनों के दिलों में डर बोते हुए हमारे दोस्तों के दिलों में हौसला पैदा करने वाला एक आंदोलन था, ऐसा एक आंदोलन आप लड़ रहे आज और जीत आपका होगा. इतना कहते हुए फिर एक बार आप सभी का सलाम करते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ. इंकलाब जिंदाबाद.